Bismillahir-Rahmanir-Rahim. In the name of Allah, who is the most beneficent, the most merciful. Welcome to the video lectures. This is lecture 9, class 3, subject English. Book is Oxford Reading Circle, and I am your teacher, Miss Usma. We are going to do Unit 23, Too Many Doctors. Let's look at the contents of today's lecture. Instructions, pre-reading, main points of the play, explanation, words meanings, and at the end there would be a home task. There are some instructions for you students. Be ready. Have your full concentration. Take out your books and notebooks. You should have your stationery items with you, and you must be supervised by your parents or your elder siblings. Pre-reading of the play Too Many Doctors. It is a play about the great Emperor Akbar and his famous minister Birbal. Emperor Akbar lived in the subcontinent many hundreds of years ago. बादशाह अकबर सब कॉन्टिनेंट में रहा करता था बहुत सौ साल पहले. अब सब कॉन्टिनेंट किसे कहते हैं? Geographically, subcontinent is the area where we are living, where पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश ये सब कंट्रीज़ जहाँ लोकेटेड हैं, इस एरिए को सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, उर्दू में बरे सगीर. तो इस जगह पे यहाँ पे बादशाह अकबर की हुकूमत होती थी. तो ये प्ले उसके और उसके मिनिस्टर बीरबल के बारे में है. Now we will look at the main points of the play. That's your book, page number 162. The play is set in two scenes. Scene 1, the court of Emperor Akbar. The Emperor Akbar's visit to Fatehpur. There is a discussion about the arrangements of that visit. बादशाह अकबर ने फतेहपुर जाना है और उनके अरेंजमेंट के लिए सारी डिस्कशन चल रही है. फर्स्ट सीन में देयर आर कोर्टियार्स, जनरल्स, मिनिस्टर्स, ऑल आर गैदर्ड इन द कोर्ट. जब एक बादशाह किसी जगह पे विज़िट करते हैं तो वो कोई आम विज़िट तो नहीं होता, उसकी बहुत सी प्लानिंग की जाती है. तो यहाँ पर उसी प्लानिंग की बात हो रही है, जिसमें कि रॉयल गार्ड्स, किचन स्टाफ, फिजिशियंस, टेलर्स, रॉयल बार्बर और ये सब लोग शामिल हैं. लाइट गॉसिप्स अबाउट द एम्परर अकबर्स बियर्ड. बादशाह अकबर की दाढ़ी के बारे में एक हल्का फुल्का मजाक चलता है बीरबल से. तो ये फर्स्ट सीन में ये सब बताया जा रहा है. The most important point of the first scene is Akbar's question. When they were all talking about the people who were going with the Emperor Akbar on his visit to Fatehpur, Emperor Akbar got a question. He asked, which profession is the most common or most popular in our capital city, Delhi? यानी हमारे कैपिटल सिटी दिल्ली में सबसे ज़्यादा कॉमन और मशहूर पॉपुलर प्रोफेशन कौन सा है? There were ministers, courtiers, general, all were gathered. So they all gave different suggestions like farming, soldiering, tailoring, cooking, etc. But Birbal's answer was totally different and unexpected. According to him, medicine is the most common or popular profession in the capital city, Delhi. After hearing Birbal's answer, chief physician got cross and said, I am a doctor
and it took me years of study to become one. Not everyone can be a doctor. चीफ फिजिशियन कहता है, जो डॉक्टर होता है वो कहता है कि ये कैसी बात है, मैं एक डॉक्टर हूँ और मुझे इतने सालों लगे हैं पढ़कर मैं डॉक्टर बनाऊँ, हर कोई डॉक्टर नहीं हो सकता। बादशाह सलामत भी उसकी तायीद करते हैं कि हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, चीफ फिजिशियन ने बिल्कुल ठीक कहा है, हर कोई डॉक्टर नहीं हो सकता। बीरबल क्लेम्ड टू प्रूव इट। बीरबल दावा कर देता है कि मैं ये साबित कर सकता हूँ जो मैंने कहा है। और अब क्या होता है, द एम्परर अकबर प्रिपेयर्ड टू गो विद बीरबल टू मार्केट प्लेस बाय डिस्गाइजिंग हिमसेल्फ। एम्परर अकबर तैयार हो जाते हैं कि मैं सुबह तुम्हारे साथ चलूँगा, बाय डिस्गाइजिंग यानी खुद को भेस बदल कर चलूँगा मैं तुम्हारे साथ, आके लोग मुझे पहचान ना सकें। अब जाहिर है बादशाह सलामत हैं, वो नॉर्मली विज़िट तो नहीं करते ना मार्केट्स में, लेकिन यहाँ पे उन्हें जाना पड़ गया है, तो इसलिए वो कहते हैं कि मैं अपना भेस बदल कर जाऊँगा ताकि मुझे लोग पहचान ना सकें। As the first scene ended up with Emperor Akbar's decision to go with Birbal to the marketplace, the second scene started from the marketplace. The Emperor Akbar is in disguise and Birbal has a bandage on one hand. बादशाह अकबर ने भेस बदला हुआ है और बीरबल के एक हाथ पे बैंडेज है, पट्टी बंधी हुई है। अकबर suggested Birbal a treatment for his cut. Jabbar, a friend of Birbal, suggested him to put neem oil on the wound. जब्बार ने किस चीज़ का मशवरा दिया है, ज़ख़म के ऊपर नीम ऑयल लगाने का। देन शमशेर इज़ अनदर पर्सन हु न्यू बीरबल, बीरबल को जो जानता है उसका वाकिफ़ है। ही गेव ओपिनियन टू पुट एलो ऑन इट, एलो मीन्स एलोवेरा, एलोवेरा लगाने का मशवरा देता है। आफ्टर दैट अकबर एंड बीरबल टॉक्ड अबाउट द पीपल हुम दे मेट फ्रॉम द मॉर्निंग, यानी सुबह से जितने लोग उनको मिले हैं उनके बारे में बात करते हैं कि जो जो हमें मिला है उसने हमें मेडिकली ही कोई ना कोई सजेशन दी है। सो बीरबल हैज़ मेड हिज पॉइंट दैट मेडिसिन इज़ द मोस्ट पॉपुलर और कॉमन प्रोफेशन इन द सिटी। Okay students, you will read the text of the play thoroughly and you will understand each and every detail of the play, and I hope you will enjoy it a lot. Here we have only discussed the main points of the play. Now we will look at the words' meanings. Some difficult words from the play we have taken and these are included in your syllabus. Just look at them. The first one is profession and the meaning is job, work or occupation. Number 2 is entire, means whole, complete, मुकम्मल होना. Popular, famous, means मशहूर. Correct, right. Number 5, appears, to come in sight. Okay students, at the end there is a home task for you. Read the play attentively and underline the difficult words. Look up the meanings of the difficult words in the dictionary and write them in your notebooks. Hope you have enjoyed today's lecture and the story of the play. Thank you.